Yeah, let me record this session. Today I have what? Today I have for you T.S. Eliot's literary works. T.S. Eliot's literary works today I have for you. It means that today I will discuss with you about T.S. Eliot's poetry, drama, and literary criticism. Today I will discuss with you. Just sharing with you PDF file, and here you will get T.S. Eliot's literary works. I hope it's visible. And here you find what? Here you find Eliot's literary works. It's very important. Especially, it's not my content. I have taken this content from Wikipedia. And you find here what? You find key poetry of T.S. Eliot. For a poet of his stature, Eliot produced a relatively small number of poems. He was aware of this even early in his career. He wrote to J.H. Woods, one of his former Harvard professor. My reputation in London is built upon one small volume of verse and is kept up by printing two or three more poems in a year. The only thing that matters is that these should be perfect in the kind, so that each should be an event. It's the statement of T.S. Eliot, and T.S. Eliot wrote this statement to whom? He wrote this statement to J.H. Woods. He wrote this statement to J.H. Woods. And who is J.H. Woods? J.H. Woods was one of his former Harvard professor. One of his former Harvard professor. And he says, my reputation in London is built upon one small volume of words. मेरा जो reputation है लंदन में वह किस पर आधारित है? एक छोटा सा जो volume of words है उस पर आधारित है. And is kept up by printing two or three more poems in a year. और एक साल में मैं दो या तीन पोएम जो है क्या करता हूँ कि कंपोज करता हूँ और वो प्रिंट होती है. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट दिस शुड बी परफेक्ट इन द काइंड. और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि ये सारी पोएम्स क्या होना चाहिए? एकदम परफेक्ट. तो परफेक्शन जो है टी एस एलियट की एक पॉइंट था कि वो इस पर बात करते थे. एक आप कह सकते हैं यू कैन जस्ट से कि इट्स ओनली द इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग. Here you can't find any question, but in the next passage you will find some important questions which are highly significant. You have to note down in your notebook. In the second passage, you find that typically Eliot first published his poems individually in periodicals or in small books or pamphlets and then collected them in books. His first collection was Prufrock and Other Observations. Earlier I also discussed with you और फिर से मैं बता दूं कि ये चीज कई बार पूछी जा चुकी कि उनका जो पहला पोएटिक कलेक्शन था उसका नाम है प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन. So you have to note down this point. His first poetic collection was Prufrock and Other Observations. In 1922, he published more poems in Ara Was Prek, London, and Poems 1920, New York. Here you find कि एक उनका नया poetic collection आता है, that is Poems 1920. Poems 1920. You find what? You find Poems 1920. It came in 1920. In 1920 में आता कब? न्यूयॉर्क में. These had the same poems in a different order, except that Ode in the British edition was replaced with Hysteria in the American edition. In 1925, collected the Wasteland and other poems in Prufrock and poems. एक उनका नया कलेक्शन आता है 1925 ईस्वी में. 1925 1925 ईस्वी में एक कलेक्शन आता है और उस कलेक्शन का क्या नाम है? यू फाइंड दैट कि उस कलेक्शन का नाम है स्पेशली 1925 एंड द कलेक्शन का जो नाम है प्रूफ्राक एंड पोएम्स. दैट इज द वेस्टलैंड. 1922 में पब्लिश हुआ था, लेकिन वो जिस कलेक्शन में उसका आया था प्रूफ्राक एंड पोएम्स. So you have to remember this point also. Prufrock and poems into one volume. I did the Hollow Men to form poems. और इसी में Hollow Men उनका एक poem है जो हमें जो edit किया गया था. Poems 1909 to 1925. From then on, he updated this work as collected poems. Exceptions are old Possum's Book of Practical Cats, a collection of light words, poems written in early youth,
posthumously published in 1967 and consisting mainly of poems published between 1907 and 1910 in the Harvard Advocate and Inventions of the March Hare poems. So these are the collections, Inventions of the March Hare poems, number one, और उसके पहले poems written in early youth and then old possums of practical cats. So I would like to tell you here a very important point, and what is that when I talk about T.S. Eliot, we all know he was a well-known critic, poet, essayist, dramatist of modern age. Especially his poetry is very famous, and the credit is given to T.S. Eliot to revive poetry and drama in modern age. And most of his poems, as you came to know, Prufrock and other observations, जो उनका पहला poetic collection है. If you are preparing for UG, CNET or any other competitive examination, whether TGT, PGT, if T.S. Eliot is in syllabus, you have to make the chart. You have to prepare a chart of his works. उसमें से आपको note कर लेना चाहिए कि Prufrock and other observations 1917 उनका पहला poem था. Prufrock and other observations 1917 published more poems. या ये पहला कलेक्शन. पोएम्स 1920 ये उनका दूसरा. पोएम्स 1920 न्यूयॉर्क में इट वाज द सेकंड पोएटिक कलेक्शन ऑफ दैट मैन. पोएम्स 1920. And the third was the Wasteland. You find the Wasteland. This was what this the Wasteland. It is also known as modern epic, and it has 433 lines. The first line is the April is the cruelest month. It published in 1922. It just tells about the post World War experiences of life, and you will come to know it ultimately became the part of his poetic collection, The Wasteland and the Poems in Prufrock and Poems, which published in 1925. And even The Hollow Man is the poem of T.S. Eliot. The Hollow Man, it was also added. And the next collection is Old Possum's Book of Practical Cats, Poems written in early youth. Here, I would like to ask some questions. Number one, Prufrock and other observations. That is the first poetic collection of T.S. Eliot. Prufrock and other observations. The first poetic collection of T.S. Eliot. It published in which era? It published in which in which year? It published in 1970. And his second collection, Poems 1922, published in New York. और उसी समय उनका 1920 में आरा वॉस प्रेक के नाम से लंदन में भी उनका आया हुआ था. तो दीज आर द इंफॉर्मेशन. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस है. पोएम्स 1920 इम्पोर्टेंट है. द वेस्टलैंड केम इन 1922 एंड प्रूफ्राक एंड पोएम्स 1925 में आया है. उसमें उसको द वेस्टलैंड को शामिल किया गया. द हालो मैन आपका ऐड किया गया था. फ्रॉम पोएम्स 909 टू 925 में आया था उनका. कल एक और पोएम फ्रॉम 909 टू 925. Old Possum's Book of Practical Cats 1939, poems written in early youth, which published posthumously after his death because he died in 1965, and these poems written in early youth posthumously published in 1967. So here you find what? Here you find a very important information, especially his poetic works की उसमें क्या क्या चीजें रही at a glance में. Now it's the second page, and you find key 1909 to 1917 material Eliot never intended to have published, which appeared posthumously in 1997. During an interview in 1959, Eliot said of his nationality and its role in his work, I would say that my poetry has obviously more in common with my distinguished contemporaries in America than with anything written in generation in England, that I am sure of it would not be what it is, and I imagine it would not be so good. Putting it as modesty as I can, it would not be what it is if I would be born in England, and it would not be what is if I would stayed in America. It's a combination of things, but in its source, in its emotional springs, it comes from America. So it's a very important statement given by T.S. Eliot in 1959, especially in an interview.
एंड यू विल कम टू नो इन दिस स्टेटमेंट टीएस एलियट सेज कि उनका जो पोइट्री है जो उन्होंने लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं केवल इंग्लैंड की देन है और ऐसा भी नहीं कि केवल अमेरिका की देन है बल्कि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगहों पे उन्होंने जिंदगी गुजारी है दोनों जगह का कल्चर देखा है दोनों जगह की लाइफ स्टाइल को देखा हुआ है तो दोनों चीज जगहों का उसमें एक कॉम्बिनेशन है एक उसका रोल है जिसकी वजह से एक खूबसूरत पोएम्स वो लिख पाए हुए सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सेकंड पॉइंट में आपको देखने को मिलता है कि in an interview he said that ki, what the poem I have written it's not only the product of America, it's not only the product of you can say England, but it's the combination of American and English culture. Because I was born in America. I lived there. I passed my childhood days, and I could learn so many things in America. Even I came to England and got citizenship in 1927, and he came in England in 1914. He also he settled down finally, and he found a different culture. So he said that whatever I have written, his poem is the reflection of the age in which he lived, culture, all these things, especially religious belief or religious faith. And you will come to know इन सबको उन्होंने किया हुआ है. तो ये एक important statement है which you have to note down, एक ध्यान में रखना है. Cleo McNally Curse notes in her biography that Eliot was deeply influenced by Indic tradition. This is another point. एक क्रिटिक है और उन क्रिटिक का नाम है क्लियो CLEO क्लियो मैकनेली MCNELLY क्लियो मैकनेली कर्स है एक क्रिटिक है उनका कहना था कि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस या ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय इंडिक ट्रेडिशन जो इंडिया का ट्रेडिशन है जो इंडिया का कल्चर है इससे वो काफी प्रभावित थे नोटेबली द उपनिषद उपनिषद का प्रभाव उनके ऊपर रहा है from the Sanskrit ending to of the wasteland to the what Krishna meant section of four parts. Especially you will come to know the wasteland में और four parts में Indian जो philosophy है जो Indian sensibility है you can just see in these works shows how much Indic religion and more specifically Hinduism made up his philosophical basic for his thought process. It must also be acknowledged as Chinmay Guha showed in his book Where the Dreams Cross T.S. Eliot and French Poetry. So this is another critic चिन्मय गुहा चिन्मय गुहा ने अपनी किताब में भी ये बातें की है वेयर द ड्रीम्स क्रॉस टी.एस. एलियट एंड फ्रेंच पोइट्री वेयर द ड्रीम्स क्रॉस टी.एस. एलियट मैकुलन से 2011 में आई दैट ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच पोएट फ्रॉम Baudelaire to Paul Valéry. He himself wrote in his 1940 essay on WB. It's the kind of poetry that I needed to teach me the use of my own voice did not exist in English at all. It was only to be found in फ्रेंच तो ये एक स्टेटमेंट है जो 1940 में डब्ल्यू बी येट्स को उन्होंने एक लिखा था लेटर में द काइंड ऑफ पोइट्री दैट आई नीडेड टू टीच जिस तरह की पोइट्री मैं चाहता हूँ पढ़ाना जो है द यूज टू टीच मी द यूज ऑफ माई ओन वॉइस जिसमें मैं अपनी खुद की आवाज देना चाहता हूँ डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश यह इंग्लिश में नहीं है एट ऑल बल्कि कहाँ पर है इट्स ओनली इन टू बी फाउंड इन फ्रेंच या केवल फ्रेंच में ही है तो ये चीजें उन्होंने किया हुआ था तो इस शीट में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो मेरी पोइट्री है वो ऐसा नहीं कि उसमें केवल यू फाइंड ब्रिटिश कल्चर या you find कि if I lived in Britain, I could learn all the things from British or British culture. No, he gives credit to both England and America, and he says that my poetry is the product of these two nations, especially its culture, especially its sensibility, lifestyle, these things he says. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर इज अ क्रिटिक क्लियो मैकनेली उनका एक कहना था कि वो इंडिक ट्रेडिशन से स्पेशली उपनिषद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे जिसका असर द वेस्टलैंड में फोर पार्टेट्स में नजर आता है एक और क्रिटिक है चिन्मय गुहा जो फ्रेंच उन्होंने एक किताब लिखा था वेयर द ड्रीम्स क्रॉस टी.एस. एलियट एंड फ्रेंच पोइट्री उसमें उन्होंने ये बात की थी कि टी.एस. एलियट काफी हद तक प्रभावित हुए थे और किससे प्रभावित हुए थे इंडियन इथॉस इंडियन कल्चर से not Indian, but French culture. Now sharing another image, another, yeah.
हियर यू फाइंड कि पहला उनका इंपॉर्टेंट पोयम आप पाते हैं जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफा। इन 1915 एजरा पाउंड ओवरसीज एडिटर ऑफ पोइट्री मैगजीन। 1915 में जो एजरा पाउंड, मैंने आपको पहले बताया था, बड़ी शख्सियत थी और एजरा पाउंड का असर बहुत ज्यादा टीएस एलियट के ऊपर था। टीएस एलियट ने एजरा पाउंड के कहने पर द वेस्टलैंड की लाइन को हटा दिया था। तो इन 1915 एजरा पाउंड ओवरसीज एडिटर ऑफ पोइट्री मैगजीन recommended to Harriet Monroe, the magazine's founder, what poetry editor of poetry, एक मैगजीन का नाम है पोइट्री और जिसके जो है रिकमेंडेड टू हैरियट मोनरो, जिन्होंने हैरियट मोनरो को रिकमेंड किया। द मैगजीन फाउंडर जो थे, हैरियट मोनरो वाज द मैगजीन फाउंडर एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन, पोइट्री मैगजीन फाउंडर, दैट she should publish the love song of J. Alfred Prufrock. She should publish the love song of J. Alfred Prufrock, although the character Prufrock seems to be middle aged। कह रहे जो कैरेक्टर है वो क्या नजर आता है, मिडिल एज। एलियट रोट मोस्ट ऑफ द पोयम व्हेन ही वाज ओनली 22। एलियट ने ज्यादातर पोयम अपनी तब लिखा जब वो 22 साल के थे। इट्स नाउ फेमस ओपनिंग लाइंस कंपेयरिंग द इवनिंग स्काई, वी नो इट वेरी वेल कि हियर इज व्हाट की इवनिंग स्काई को लेके बात की गई। स्पेशली दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन table. Those who have read this poem, they know it. What is the importance of this image? In this poem, you find Prufrock is a character that is a middle-aged person. He is bald. He wants to propose the girl, but he has lack of communication. He is indecisive. Means he is not in position to take the decision, and you find that he just he has only desire to propose the girl, but he doesn't know ki how, what, and where he has to propose the girl. And we find hesitation, we find lack of communication, and we find that he does not have any confidence. He does not have any confidence. So these things we find, and especially in modern age, we find such a character. More or less, that character can be compared to Hamlet also, because Hamlet has delay in action. The same thing we find in this in Prufrock, that is procrastination or delay in action. So you will come to know कि जो ये पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्री प्रूफ्राक, ये 1915 ईस्वी में आई हुई है। एजरा पाउंड ने इसको जो है क्या किया था, पब्लिश करने के लिए कहा था हैरियट मोनरो को, किसमें, एक मैगजीन है पोइट्री नाम की मैगजीन में, उन्होंने कहा था इसको पब्लिश किया जाए। और आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर है वो मिडिल एजेड है, इनडिसिसिव है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन उसमें है, उसमें जो है देयर आर सम अदर इश्यूज, सम अदर चैलेंजेस यू फाइंड। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ this image, I would like to talk about this image ki a patient authorized upon a table. Here you find that ki Prufrock is mentally sick और वो अपने sickness को एक patient में देखता है, और जिसको कि ईथर दिया गया है, जो ऑपरेशन थिएटर में है या लाइंग ऑन अ टेबल है। तो एक्चुअली में नो वन इज पेशेंट या नो वन हैज एथराइज्ड, बट Prufrock himself is the patient. He is mentally sick. He doesn't know how to propose the girl, where to propose the girl, and whom to propose. These are the problems, and he is not in position. Means lack of communication and unable to take the proper decision. That is the basic problem of that man. Were considered shocking and offensive, especially at a time when Georgian poetry was hailed for its or derivations of the 19th century romantic poets. Here it's a very important point कि जब जॉर्जियन पोइट्री चल रही थी और उसमें रोमांटिक कॉन्सेप्ट होता था या रोमांटिक पैटर्न को दे हैव फॉलोड, दे व्हाट इज द पोएम हैव बीन रिटन बाय जॉर्जियन पोएट, दे फॉलो द रोमांटिक पैटर्न। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की पोएम्स का आना वह शॉकिंग था, इस तरह की लाइन का यूज करना पोएम में। The poem's structure was heavily influenced by Eliot's extensive reading of Dante and refers to number of literary works including Hamlet। तो दांते का भी इन्फ्लुएंस देखा जाता है, हैमलेट का भी इसमें कैरेक्टर के रूप में यूज किया गया है। फ्रेंच सिंबल्स का भी आपको देखने को मिलेगा। इट्स रिसेप्शन इन लंदन कैन बी गाज्ड फ्रॉम एन अनसाइंड रिव्यू इन टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट on 21st June 1917। The fact that these things occur to the mid of Mr. Eliot is surely of the very smallest importance to anyone.
even to himself. They certainly have no relation to poetry. So शुरू में उतना वो पॉपुलर नहीं हुई, but ultimately with the passage of time it was interpreted and it got popularity, and it can be also said कि it paved the way for modern poetry. जिस तरह के subject matter को, जिस तरह की चीजों को लेकर के हैं, it paved the way and people become habitual to read and they enjoyed it. And one can see beautiful comments related to this poem. So, Love Song of Jeffrey Prufrock is a very beautiful poem, and this is a poem which published in 1915. And Ezra Pound just recommended Harriet Monroe, founder of Poetry magazine. He published this poem. And Prufrock is what? Prufrock is a character that is a middle-aged character. He wants to propose the girl, but he has lack of courage. He has lack of communication. He is not in position to take the decision. So these things you find, and this is the image, and you find यह दांते का भी रेफरेंस है, हेमलेट का जो शेक्सपियर का प्ले है उसका, इसमें पोलोनियस का भी कैरेक्टर का जिक्र किया गया है, and you find French symbolists, all these things you find. Now just uh, you find here what the next one, The Wasteland. It's a masterpiece of this man. In October 1920, Eliot published The Wasteland. जो Wasteland है कब publish हुई है 1920 में, और the Eliot published The Wasteland in The Criterion. Second question कब आया हुआ था The Criterion में? Eliot's dedication to Il Miglio Fabro, The Better Craftsman, refers to Ezra Pound, और ये कहा गया कि जो इसका better craftsmanship है वो Ezra Pound को credit दिया जाता है. So you here find what कि the poem The Wasteland published in 1922, और ये जो पूरी पोयम है 433 लाइन में. हाउ मेनी लाइन्स? 433 लाइन्स. इट इज आल्सो नोन एज मॉडर्न एपिक, and you will come to know कि the poem shows post World War experiences of life, especially after First World War, what happened, what the people were thinking. It has a theme of lust, passion, degradation of the moral values, and the downfall of the church, the people's losing of faith in religion and God. These are the issues which have been picked up here, which have been taken significant hand in editing and reshaping the poem from a longer Eliot manuscript to the shortened version that appears in publication. And the credit first this poem published in the Criterion Journal. That is another important question. Or on the advice of Ezra Pound, T.S. Eliot minimized the wasteland. This is another important point. It was composed during a period of personal difficulty for Eliot. His marriage was failing, and both he and Viviani. Already I told you कि उनका जो मैरिज हुआ था विवियनी से हुआ था, लेकिन इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज. काफी ज्यादा उसमें ट्रबल था. उसी दरमियान ये पोयम आया था. Were suffering from nervous disorder. Before the poem's publication as a book in December 1922, Eliot distanced himself from its vision of despair. On 15 November 1922, he wrote to Richard Eldington saying, "As for the wasteland, that is a thing of the past so far as I am concerned, and I am now feeling toward a new form and style." The poem is often read as representation. तो यू फाइंड दैट कि उन्होंने रिचर्ड एल्डिंगटन को लेटर लिखा था, और उसमें वो कहते हैं कि जो पोयम है ऑन 15 नवंबर 1922, he wrote a he wrote to Richard Eldington saying, as far the wasteland, जो wasteland है, that is a thing of the past, या तो thing of the past है, so far as I am concerned, जहाँ तक मेरी बात है, and I am now feeling toward a new form. मैं चाहता हूँ कि एक नए फॉर्म को लेकर के, एक नई स्टाइल के को लेकर के पोयम को लिखा जाए. The poem is often read as a representation. The poem is often read as a representation of style. The poem is often read as a representation of the disillusionment of the post-war generation. Dismissing this view, Eliot commented in 1931 when I wrote a poem called The Wasteland. Some of the more approving critics said that I had expressed the disillusion of a generation, which is nonsense. I may have expressed for them their own illusion of being disillusioned, but that did not form part of my intention. The poem is known for its obscure nature, is slippage between satire and prophecy. Here is what? Here is satire and prophecy.
Its abrupt change of speakers, location, and time. This structural complexity is one of the reasons why the poem has become a touchstone of modern literature, a poetic counterpart of a novel published in the same year, जेम्स जॉयस। और जेम्स जॉयस का एक नॉवेल आया था यूलिसिस, जो उसी साल आया था 1922 में। Among its best known phrase are April is the cruelest month। ये सबसे उसकी पहली लाइन है, April is the cruelest month। I will show you fear in a handful of dust and शांति शांति शांति। द संस्कृत मंत्र एंड द पोएम, शांति शांति के साथ इसका अंत हुआ है। I will show you fear in a handful of dust। These things you find कि हाउ डू यू सी, हाउ डू यू टेक, हाउ डू यू फाइंड। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वहां पे लिखी गई है या जो आप वहां पे देखते हैं या पाते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू these are the significant points, these are the important points which you have to remember, all these things. So related to, as far as matter is concerned, to the wasteland is what the wasteland is a uh, it's known as modern epic divided into 5 sections, जिसमें जो है द बरियल ऑफ द डेड, डेथ बाय वाटर, व्हाट द सरमन सेड, एंड यू फाइंड मतलब इट्स डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 433 लाइन है। टाइरिसियस इसका प्रोटेगोनिस्ट है या स्पीकर है, और ब्लैक वर्ड्स में लिखी गई है उसकी कुछ लाइनें, एंड इसमें उपनिषद का यूज किया गया है, गंगा का जिक्र किया गया है, गौतम बुद्धा का जिक्र किया गया है, सेंट अगस्टीन का जिक्र है, मैडम सोसोस्टिस का जिक्र है, टाइपिस्ट गर्ल का जिक्र है, एंड द पोएम एंड्स विद शांति शांति शांति, द संस्कृत मंत्र। एंड you find कि the poem came in 1922, and the same year, what came the same year, you find James Joyce's uh, Ulysses came. Now you find the Halloween. The Halloween appeared in 1925. For the critic Edmund Wilson, it marked the nadir of the phase of despair and desolation given such effective expression in the Wasteland. It's Eliot's major poem of the late 1920, और इसमें भी जो है क्या है वही डिस्पेयर एंड डिसोलेशन यू फाइंड। तो यू फाइंड कि 1925 में पब्लिश हुआ है, एंड यू फाइंड कि डिस्पेयर एंड डिसोलेशन हियर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि पब्लिश्ड इन 1925, find despair, we find desolation. These things we find. It is Eliot's major poem of the late 1920s, similar to Eliot's other poem. It is richly but ambiguously elusive and deals with the aspiration to move from spiritual barrenness to hope. From spiritual barrenness to hope. For human salvation, Eliot's style of writing in Ash Wednesday showed a marked shift from the poetry he had written prior to his 1927 conversion, and his post-conversion style continued. In a similar way, his style became less ironic, and the poem were no longer populated by multiple characters in dialogue. Eliot's subject matter also became more focused on his spiritual concerns and Christian faith. So here you find कि Ash Wednesday you find Gironson, and especially 1927 में उन्होंने रोमन कैथोलिक को अडॉप्ट किया था, उनका कन्वर्जन हुआ था। तो ही इसके बाद से जो पोएम में आती है स्पिरिचुअलिटी आने लगती है। Many critics were particularly enthusiastic about Ash Wednesday. Edwin Muir maintained that it is one of the most moving poems Eliot wrote and perhaps the most perfect, though it was not well received by everyone. The poem's groundwork of Orthodox Christianity discomfited many of the more secular literary. Now the next collection is Old Possum's Book of Practical Cards in 1939. Eliot published a book of light words. It's a book of light words. Old Possum's Book of Practical Cards. Old Possum was Ezra Pound's friendly nickname. Oh, it's a very important question. Old Possum was Ezra Pound's friendly nickname for Eliot. For Eliot. Old Possum was Ezra Pound's friendly nickname for Eliot. The first edition had an illustration of the author on the cover in 1954. The composer Elan Ras Thorne set six of the poems for speaker and orchestra in a work titled Practical Cats. After Eliot's death, the book was the basis of the musical Cats by Andrew Lang.
तो यू फाइंड की ओल्ड पॉजम्स बुक एक जो है कलेक्शन है इनका पोएम लाइट वर्स का कलेक्शन इट केम इन 1939 ओल्ड पॉजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स you find here is here or Possum was what Possum old Possum was the nickname of Ezra Pound for Eliot. Eliot उनको इसी नाम से जानते थे. And you find the next one, Four Quartets is very important. Eliot regarded Four Quartets as his masterpiece. Eliot ने खुद कहा था कि उनका masterpiece है. And you find कि here and it is the work of the most all led him to be awarded the Nobel Prize उनको मिला था. It consists of Nobel Prize का मिला था 1948 में 1948 में Nobel Prize मिला हुआ था. It consists of four long poems. इसमें four long poems है. इज फर्स्ट पब्लिश सेपरेटली और उसमें क्या है बर्ट नाटन पहला है दूसरा ईस्ट कॉकर है द ड्राई साल्वेजेस है और लिटिल गिडिंग है ये चार है ध्यान में रखना बर्ट नाटन 1936 ईस्ट कॉकर 1940 द ड्राई साल्वेजेस 1941 लिटिल गिडिंग 1942 each has five sections although they resist easy characterization each poem includes meditation of the nature meditations on the nature of time in some important respect theological, historical, physical, and its relation to the human condition. Each poem is associated with one of the four classical elements. So what is important ये पूरा सेक्शन बहुत important है कि फोर क्वार्टेट्स आपका है और ये चार हिस्सों में था इसने काफी हद तक इनको फेमस किया और नोबेल प्राइज भी मिला और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर थियोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिजिकल each poem is associated with one of the four classical elements, respectively air, earth, water and fire. जो चारों पोयम है वो किससे रिलेटेड है एयर अर्थ वाटर एंड फायर. बर्ड नाटन is a meditative poem that begins with the narrator trying to focus on the present moment while walking through a garden, focusing on images and sounds such as the bird, the roses, the clouds, and the empty pool. The meditation leads the narrator to reach the still point in which there is no attempt to get anywhere or to experience place and are to be instead experiencing a grace of sense. In the final section, the narrator contemplates the arts, words, and music as they relate to time. The narrator focuses particularly on the poet's art of manipulating. So you find this one and here you find कि Ash Wednesday को लेके बात की गई है. I will not discuss these things in a long way. You can just read it. But here is Ash Wednesday. Ash Wednesday is the first long poem written by Eliot. ये उनका पहला लॉन्ग पोएम है जो एलियट के द्वारा लिखा गया था. His 1927 conversion to Anglicanism उनका जो कन्वर्जन हुआ था एंग्लिकनिज्म 1927 में. तो यू फाइंड एंड यू फाइंड कि उसमें सब चीजें दिया गया है ईस्ट कॉकर में क्या है द ड्राई साल्वेजेस में क्या है लिटिल गिडिंग में क्या है यू फाइंड दीज थिंग्स सो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन हियर फाइंड द इंफॉर्मेशन की फोर क्वार्टेट्स को लेकर के द वेस्टलैंड को लेकर के क्रिटिक्स का अपना क्या ओपिनियन है वो सबको दिया गया है उन सबको लेकर के बात कही गई है उनका स्वीनी एगोनिस्ट ऑल दिस सिक्स यू फाइंड एंड here I would like to tell you ki you find yeah here you find his place but about his place I will discuss with you tomorrow so tomorrow I will share these things yeah here you will come to know about his place उनका कुछ प्लेस है जो नाम आपको ध्यान में रखना है द कॉकटेल द फैमिली रीयूनियन है 1939 द कॉकटेल पार्टी 1949 द कॉन्फिडेंशियल क्लब 1953 एंड द एल्डर स्टेट्समैन 1958 यू फाइंड ये सब चीजें रही है uh, and you find ki the cocktail party Eliot wrote the cocktail party while he was a visiting scholar of the Institute of Advanced Study वहां के थे तब उन्होंने लिखा था ये उनका स्टेटमेंट है जो आपको नोट करना चाहिए ध्यान में रखना चाहिए इसके अलावा उनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म था न्यू क्रिटिसिज्म से काफी प्रभावित थे और उनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म न्यू क्रिटिसिज्म को लेकर उन्होंने बात किया है विलियम इम्पसन का सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी को लेकर के उनका था उनका क्रिटिकल एसेट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जिसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है उसको लेकर उन्होंने बात किया है एंड यू फाइंड इसके अलावा हियर
यू फाइंड मेटाफिजिकल पोयर्स को लेकर के बात हुई है, द वेस्ट लैंड के ऊपर उनका अपना क्या है, उस सब चीजों को लेकर के उन्होंने बताया हुआ है। एंड यू फाइंड वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय या उसके बाद का जो सिचुएशन है उसको लेके उन्होंने बात किया। सो इन दिस वे यू कैन गो हियर, नथिंग यू फाइंड हियर, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि दिस इज यू हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू डू। ओके, जस्ट कंक्लूडिंग।